वो ऊपर कर दे तो थोड़ा सा लाइट वाला शॉर्टन पूरा इधर वाला कर ये। हेलो और नमस्कार, मेरा नाम नवनीत आनंद है और आज हेलो और नमस्कार, मेरा नाम नवनीत आनंद है और आज आप ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के इस BI डायलॉग सीरीज से जुड़े हैं। एज यू नो, ब्यूरोक्रेट्स इंडिया इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट credible and popular forums highlighting stories of good governance। इसके तहत हम लोग बहुत सारे पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो अच्छे काम कर रहे हैं, ताकि उससे बाकी लोगों को समझ में आए कि किस तरह का गुड गवर्नेंस देश में हो रहा है। वी ऑल्सो ब्रिंग टू यू a lot of stories. Our website is www.bureaucratsindia.in. We are also available on social media platforms. And thank you for joining us. Today is May the 6th, 2023. And we have with us a very, very special guest, Shri Sanjay Singh, IPS of 1990 batch, a special CP in Delhi Police. नमस्कार सर, और बहुत स्वागत है आपका ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर का परिचय बहुत लोग जानते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के अग्रतम पदाधिकारियों में हैं। among others, Sanjay Singh sir is dealing with is assigned the task of perception management and media cell division, besides of course licensing and legal and technology and planning and implementation division. इसके पहले सर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ जोन दिल्ली रह चुके हैं, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न जोन रह चुके हैं और जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज दिल्ली रह चुके हैं। सर हमारे कॉलेज के सीनियर भी हैं, हिंदू कॉलेज के, और इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत धन्यवाद आपने समय दिया हमारे इस शो में आने के लिए। शुरू करते हैं सर। पिछले दशक और करीब 15 सालों में पुलिसिंग के प्रारूप में परिवर्तन हो गया है। मुझे याद है, मैं बिहार के एक छोटे से शहर से आता हूँ, हाजीपुर, और हमारे यहाँ एक बार चोरी हो गई थी और थाने में जाकर बुलाने के लिए, तहकीकात करने के लिए हम लोगों को, जबकि मेरे पिताजी प्रतिष्ठित वहाँ के प्राध्यापक थे एक लोकल कॉलेज में, लेकिन फिर भी हम लोगों को बुलाना पड़ा था, कहवाना पड़ा था किसी से। तब 2-3 दिन बाद शायद पुलिस आई थी। अब पुलिसिंग का प्रारूप बदल गया है। वी सी अ वेरी वेरी प्रोएक्टिव पुलिस, वेरी ह्यूमेन पुलिस, वेरी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं सर? कैसे पुलिस का प्रारूप बदला है पिछले दशक और 15 सालों में, और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का आप देखते हैं रूप? जैसे अभी आपने बताया, पुलिसिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग प्रोफेशन इन इंडिया। अगर आप देखें, आपने बिहार की बात की और अभी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, और खासकर कोई भी शख्स जब पुलिस को कॉल करता है तो कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी पुलिस को डिस्ट्रेस में कॉल की जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी जगह हो, उसमें ये जरूरी है कि पुलिस का रिस्पॉन्स क्या था उस शख्स को, खासकर जो जिसके साथ ये घटना हुई, ये प्रॉब्लम हुई, उसको हैंडल करने में। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि उसको किस तरह से हैंडल किया। तो पुलिस रिस्पॉन्स में जैसे कि बहुत जरूरी है, जो कंप्लेनेंट है, जो पुलिस से आके मिले, कि उसको एक ह्यूमेन टच हो, उसको लगे कि ये जो शख्स जो मेरे साथ डील कर रहा है, वो मेरी बात उसने पूरी तरह से समझी, और साथ साथ जो जो लीगल कार्रवाई, जो FIR रजिस्टर होनी थी, वो उसने ढंग से उसको प्रॉपर सेक्शंस के अंदर रजिस्टर किया। उसके अंदर आप पाएंगे ओवर द इयर्स नाउ दिल्ली के अंदर खासकर EFIR का हम लोगों ने एक सिस्टम शुरू किया है, और जो कि कई सारे जो ऑफेंसेस हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हुए, खासकर जैसे मोटर व्हीकल थेफ्ट हुआ, हाउस बर्गलरीज हुई, इन सब के अंदर आप तुरंत EFIR रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो आपको पुलिस स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं होती। तो जरूरी है कि विद टाइम्स पुलिस हैज चेंज, पुलिस इज इवॉल्विंग,
एंड जो एक दूरी या जो एक पब्लिक के साथ और जो पुलिस की हो उसको जितना मिनिमाइज किया जा सके वो हम लोग का एक एफर्ट रहता है. जी, in fact, I started working very closely with the police. As you are aware, we were handling the Central IPS Association, social media. और जब उसमें हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो लगा कि there are so many great things being done by the police. लेकिन one rotten apple, कुछ ऐसे के वाकयात होते हैं जिसके कारण पूरे पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन को बदनामी हो जाती है. हम लोग सिटीजन्स भी थोड़ा रेस्टलेस है, पुलिस से एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है, लेकिन हम थोड़ा भी लीवे नहीं देना चाहते हैं और एक ब्रश से सबको कलर कर देते हैं. आई थिंक दैट इज अनफेयर ऑन आवर पार्ट एज सिटीजन्स. और मेरा तो सर मानना है कि जो कोविड के समय जिस तरह का पुलिस का रूप दिखा, वी हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एंड वी हैव सीन द ग्रेट वर्क बीइंग डन बाय द पुलिस. आपने ठीक कहा सर, अभी एफआईआर जैसा the initiative, you don't even know you need to go to the police station. Sir, state apparatus काफी substantially modernized हो गई हैं आजकल, but nature of crime भी बहुत परिवर्तित हो गया है, जो कि एक साधारण मतलब it's natural that it's posing a challenge to the police force. एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर के नाते जो नेचर ऑफ क्राइम चेंज हो रहा है, अगला सवाल मेरा होगा साइबर क्राइम पे, उस पे आपका क्या मानना है सर? देखिए, दिल्ली इन 2023 इज सो मच मोर डिफरेंट देन इवन 20-25 years बैक. अगर आप देखें तो जब मैंने व्हेन आई जॉइन सर्विस एज एसीपी रोहिणी, दिस इज तो एट दैट टाइम रोहिणी जो है, वो जो पुलिस स्टेशन जो था, वो दिल्ली की बात करता हूँ, तब एक टेंट में था. और अब दिल्ली के अंदर आप रोहिणी अगर आप देखें, रोहिणी इज अ फुल फ्लेज्ड, नाउ इन फैक्ट इट्स अ फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट. और व्हेन आई वाज हैंडलिंग डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, देन रोहिणी अगेन वाज वन स्मॉल सब डिवीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यू कैन इमेजिन हाउ मच पॉपुलेशन द एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस इन दिल्ली अलोन. सो दैट मींस जो, और खासकर इसमें माइग्रेंट पॉपुलेशन एज वेल एज मूविंग पॉपुलेशन, जो कि एनसीआर से ट्रैवल करता है, बाहर से आता है, दिल्ली आता है, फिर चला जाता है. तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस, अगर आपके क्रिमिनल्स हो और आपके जो इस तरह के हों जो वारदात करके यहाँ पे दिल्ली में क्राइम करके आप बाहर चले जाएं, और आजकल खासकर इसके साथ साथ अगर आप साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स को जोड़ दें, जो कि घर बैठे बीट इन एनी स्टेट, झारखंड हो या कोई भी जगह हो, वहां से अगर वो ऑपरेट करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ दैट पुलिस का रिस्पांस और उसको इफेक्टिव बनाना के लिए हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बट इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. मैं हर दिन पढ़ता हूँ. अभी सर आप लोगों ने एक बहुत बड़ा रेड किया नूह में. सो नूह इज द न्यू जामतारा ऑफ इंडिया, where youngsters are taking to cybercrime in hordes. That's not a great happy trend. But मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाते हैं. आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है. तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? साइबर क्राइम बहुत कॉमन है, मुझे रोज कम से कम 5 मैसेजेस आते हैं, एंड सो इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं कि इस तरह के मैसेजेस को आपको या तो तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए. तो इस तरह के कुछ टिप्स आप क्या देना चाहेंगे लोगों को सर? देखिए, व्हेन आई वाज स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, और जब उस वक्त कोविड का टाइम था, आई रिमेम्बर सड़क के ऊपर कोई शख्स नहीं था, ट्रेन्स बंद हो चुकी थी, एयरपोर्ट क्लोज डाउन हो चुके थे, कोई हवाई जहाज नहीं आ रहा था. एट दैट टाइम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स एंड मेन, दे वर ऑन द ग्राउंड, एंड डॉक्टर्स थे आपके हॉस्पिटल्स में. उसी वक्त तुरंत साथ साथ जब ये हुआ, साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत एक्टिव हो गए थे. एंड इनफैक्ट इनिशियल 1 week में वी हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू हैव एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द अदर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पुलिसेस, कि वो जो रेमडेसिविर के फेक इंजेक्शंस हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाना हो या कोई भी चीज हो,
उस तरह की कॉल्स वो लोग करके लोगों को उसमें फंसा रहे थे। सो इफेक्टिव जो हमने एक्शन लिया, एक हफ्ते के उसके बाद कॉल्स वो आनी खत्म हो गई, कई सारे हम लोगों ने क्रिमिनल्स को उसमें पकड़ा। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज, दीज साइबर क्रिमिनल्स। बट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, खासकर अपने पब्लिक में, अपने लोगों में। हम लोग कोशिश भी बहुत करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने के लिए। दिल्ली पुलिस इनफैक्ट एक स्पेशलाइज, जैसे अभी बताया, एक मीडिया सेल, एक परसेप्शन मैनेजमेंट सेल हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसका की काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ स्पेशल प्रोग्राम्स करना। जितने भी हमारे लोग हैं, फिल्म्स के द्वारा हो, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, एडवर्टीजमेंट्स हो, किस्सा खाकी का के हमारे पॉडकास्ट सीरीज हो, कई कई तरीके के स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं, जिससे कि जनता को अवेयरनेस बढ़े। बी इट अपार्ट फ्रॉम, जैसे ये साइबर क्राइम मैंने कोविड के परिप्रेक्ष्य में बताया, साइबर स्टॉकिंग हो, साइबर बुलिंग हो, साइबर पोर्नोग्राफी हो, कई उसके अंदर आजकल फिशिंग हो, बहुत सारे उसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्राइम है साइबर वर्ल्ड के अंदर। उसके बारे में जानकारी हर एक को लेना बहुत जरूरी है। Very rightly said, sir. My dear friends, you're watching Bureaucrats India Dialogue with Shri Sanjay Singh, IPS of 1990 batch and Special CP of Delhi Police. As sir is rightly saying, we need to be very, very vigilant. सबके हाथ में मोबाइल, और जो क्रिमिनल्स हैं, जो इनविजिबल क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए घर घर में पहुंचना बहुत आसान हो गया है. Do not get lured by those tempting messages that you get कि आपको घर बैठे 1,000 रुपया रोज कमा लेना है, 2,000 रुपया रोज कमा लेना है. It is painful when I read every day, almost every day in a newspaper, that people with perhaps higher IQ than ordinary people are also getting trapped. That's not something that we should be encouraging. I request on behalf of course, Delhi Police and Sanjay sir, all of us to be very, very vigilant. In fact, greed is one of the biggest thing which they play upon. अभी हाल फिलहाल एक मित्र थे मेरे, उन्होंने फोन करके मेरे को बताया, एक जो है उनका रिसीव्ड अ कॉल, उसके अंदर वो जो शख्स जो था उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और पुलिस का पीछे भी पूरा एम्बुलेंस वगैरह लगा के उसने उसको कॉल किया था. सो फॉर वंस ही वाज एब्सोल्युटली श्योर कि ये जो शख्स जो है बॉम्बे पुलिस से है, और ये जो कॉल कर रहा है जिसके बारे में और बता रहा है कि उसने कुछ गलत किया है, he literally walked into the trap, and then he called me up कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है. So then I advised him, and then we took action. So they are very smart, and these criminals, and they know how to con people. That's why people get trapped into it. So awareness, knowledge is very, very crucial in tackling cybercrime. Very true. And I know of how police forces are also, sir, modernizing itself. काफी काम हो रहा है इस पे back end में, you know, people are being trained to handle this. But कहीं ना कहीं ये साझेदारी वाला मसला है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा. सर, प्रिवेंटिव पुलिसिंग एक आजकल काफी प्रिडोमिनेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस है. दिल्ली पुलिस के बारे में सर कुछ बताएं इसके बारे में. देखिए, प्रिवेंटिव पुलिसिंग के अंदर सबसे मेन पहलू है, एक तो हम लोगों की आईज एंड ईयर्स की, जो कि, और प्रहरी सिस्टम, जो हम लोगों के जो सोर्सेज जो होते हैं, जो कि चाहे वो पान वाला हो या जो हो, या प्रहरी जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो लोग हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन एरिया के बारे में, अपने नेबरहुड के बारे में आपको दें. साथ साथ उसको फोर्स मल्टीप्लायर्स आजकल हमारे हो जाते हैं सीसीटीवी कैमरास. जो सीसीटीवी कैमरास आपके नेबरहुड एरियाज में, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हो, जो कुछ गवर्नमेंट ने लगाए हैं. रिसेंटली दिल्ली पुलिस इज गोइंग इन अ बिग वे फॉर सेटिंग अप एडिशनल सीसीटीवी कैमरास all over the city. So this will act as a huge deterrent and as well as a prevention
मुझे लगता है कुछ तकनीकी इशू है। आप ब्यूरोक्रेट्स इंडिया डायलॉग सीरीज का ये मई 6 का कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें संजय सिंह IPS of 1990 batch and Special CP of Delhi Police is with us, talking about the various initiatives and programs by Delhi Police. Yes, sir. वो रुक गया था बीच में। अनम्यूट करना होगा सर, म्यूट हो गया। No, it's okay. Yes, sir. So all this goes in a long way in the preventive policing. साथ साथ आप देखें छोटी छोटी चीजें हैं, सर्वेंट वेरिफिकेशन आपका है, टेनेंट वेरिफिकेशन आपका है, अगर कोई एम्प्लॉई आपके पास है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के हम लोग के सिस्टम्स है स्पेशल ब्रांच के अंदर, वो कंपनीज करा सकती हैं। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ प्रिवेंटिव पुलिसिंग। सर्वेंट वेरिफिकेशन में कितने सर्वेंट्स हैं जिन्होंने की नॉट ओनली थेफ्ट बट आल्सो they have committed murder in a household and then ran away. I remember बहुत पहले की बात है, we went to a house जहाँ पे की murder हुआ था, and there was this a person from foreign origin from Nepal. He had committed crime and he had ran away. But जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो उसके बाद भी वहाँ पे और भी सर्वेंट्स हम लोगों ने पाए, and they were not scared कि अभी अभी उनके फादर का मर्डर करके एक सर्वेंट है जो कि भागा है। तो इट्स इम्पोर्टेंट, जो लोग आजकल सीसीटीवीज आप देखें, लोग एज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म अपने घरों में लगा रहे हैं, और काफी कंपनीज हो, घर हो। सो यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू build in mechanisms of security and an environment in which you can be safe. Well said, sir. So CCTVs are the force multiplier, and we should all be aware, along with the regular police architecture. I think citizens should also be aware and be responding and cooperating with the police. Sir, cyber security से एक और मुझे याद आ रहा है कि एक साइबर उदय 2.0 लॉन्च हुआ था on Cyber Security Day. Which is an awareness program and DigiLocker for integration of licensing services. एक बुक भी, ई बुक भी लॉन्च हुआ था, उसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे आप? अगर किसी को एक्सेस करना है वो बुक, तो वो क्या वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, डिजी लॉकर हम लोगों ने अपनी लाइसेंसिंग यूनिट दिल्ली पुलिस में शुरू किया, जिसमें कि ऑथेंटिकेटेड उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको हम लोग कन्वीनियंटली रिट्रीव कर सकते हैं, और वो भी अगर और किसी यूनिट को या कहीं पे देना हो, इट for seamless integration as well as facilitation, it has been introduced. इसी तरह का अवेयरनेस के बारे में मैंने पहले बात की। एक और जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था वो था ट्रू कॉलर का। अगर दैट वाज टू कम्बैट इम्पर्सनेशन, अगर कोई शख्स अगर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर को कॉल करता है तो उस पे ग्रीन बैज और एक ब्लू टिक मार्क वो आएगा, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि ये जो कॉल जो मेरे को आ रही है वो दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर से आ रही है। सो दीज आर टूल्स एंड मैकेनिज्म्स इन विच नॉट ओनली टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, स्पेशली इन लाइसेंसिंग। आप ब्रांच ई ऑफिस का हम लोग जैसे बहुत ज्यादा उसमें प्रचलन हो गया है, फाइल्स आर बीइंग मूव्ड टू ऑफिसर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स, और ई पोर्टल्स, हमारा जो ईटिंग हाउस हुआ, लॉजिंग हाउस, गेस्ट हाउसेस, इवन आर्म्स लाइसेंसेस के अंदर, नाउ with most of these facilities we've gone online. That's interesting. So आपका सर वो डोमेन भी है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो और क्या क्या इस तरह के नए टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड इन policing these days by the Delhi Police? टेक्नोलॉजी में एक जो सबसे मेजर जो हम लोग के चेंजेस हम लोग लेके आने वाले हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हम उसको रिप्लेस करके एक मोर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल ट्रंकिंग रेडियो सिस्टम हम लोग लेके आने जा रहे हैं अपनी दिल्ली पुलिस के अंदर। साथ साथ
जो ये साइबर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, nearly 9,000 cameras we're going to install all over Delhi with advanced artificial intelligence features, which will help policing in a huge way. That is one thing which we are working upon. जो हम लोग की जो बीट कांस्टेबल, जो मेन जो हमारा सिपाही जो की बीट कवर करता है और इलाके को सुरक्षित रखने के लिए, उसको ई बीट बुक्स हम लोगों ने दी हैं. And these e-beat books are also will be gradually and are linked to our CCTNS, our crime criminal tracking network systems. उसके साथ साथ ICJS, interoperable criminal justice system, उसके साथ हम लोगों ने लिंक किया है. So it's a huge network right from the ground, from the beat up till the criminal justice system and तिहार के साथ linkages. तो सब एक system ऐसे बनाने की कोशिश है कि in which technology acts as a force multiplier for the police personnel on the ground, which can result in improved and better policing. Wonderful. Our congratulations, sir, for all these great initiatives. मैं सर पढ़ रहा था कि एक दिन दिल्ली पुलिस को 19,000 कॉल्स आए थे, जिसमें 5,500 5,500 कॉल्स पे एक्शन भी लिया गया था. तो इस तरह के so of course these days social media has become an important vehicle for citizens to reach out to the police. You have also been active, and the lead police Twitter handle is also active. Facebook is also there now, but the first instinct for people to reach out to police is call 100. And as we said, I'm not aware of the average calls per day, but 19,000 calls एक दिन आए थे और 5,500 पे एक्शन लिया गया था. तो उसके बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए हम लोगों को. देखिए, on an average Delhi police handles nearly 15,000 calls we receive, and on a day like Holi, Diwali, those are special days. The calls gets easily multiplied by quite a huge number that is there. So अब जो है आजकल instead of 100 people now you dial 112. That is the emergency response support system architecture जो अब जो बना है जी. उसके अंदर, so 112 is the response number which we in the police attend to, and PCR का communication system के साथ साथ network, जैसे मैंने बताया, जो अपनी police PCR vehicles जो हैं on ground as well as motorcycle vehicles on ground are all interconnected with the district communication system and also with the hospitals. So it's a huge network of vehicles and communication system which has been put into place, and our response time is very, very good. Great, sir. The passion of Delhi Police for making Yuva community policing scheme a success has been incredible. It has brought valuable additions to the department. इस एक यूनिक इनिशिएटिव के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे आप? See, one thing is certain. If you look at it all over the world, अगर आप देखें, we in Delhi Police stand at in terms of reaching out to the community. A lot of effort has been done by Delhi Police in this regard, and we have looked at specifically into groups, चाहे women हो, children हो, North Eastern के लिए assistance teams हमारी हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए, and also जैसे आपने बात की युवा, especially juvenile delinquents and criminals who are young, first time criminals engaged in petty crimes, and even victims आजकल जो कि accident के victim हो या किसी उस तरह के, in terms of युवा, we have Ministry of Skill Development के साथ मिलकर, NSDC के साथ मिलकर programs have been initiated, and within अभी
हाल फिलहाल 3 महीने के अंदर तकरीबन 2,500-3,000 लोगों को हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जॉब्स, सॉलिड जॉब्स जो कि उनको दी गई। That's amazing. That's wonderful. सर एक इसी से नॉट एग्जैक्टली जुड़ा हुआ बट एक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस काफी कार्रवाई कर रही है कि जो सीज्ड होते हैं ड्रग्स उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और यू नो तो ओवरऑल सर इस ड्रग्स मेनेस को टैकल करने के लिए क्या क्या कर रही है पुलिस? See, drugs is one major issue which affects us all, and especially अगर आप देखें, the people, the most vulnerable of them are the youth, and target भी वो होते हैं drug peddlers and dealers के, तो be it schools and be it colleges. That is one place we really focus on, not only कि चाहे वो पान शॉप हो या कोई ड्रग पेडलर जो उस एरिया में जो हम लोग के आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट जोन्स जो हैं कि जहाँ पे कि ड्रग मूवमेंट या ड्रग पेडलर्स का वो उधर स्पेशल drives to apprehend of course and target these criminals goes on, और साथ ही drug awareness programs among the children, among the youth is very, very important that they stay away from this menace, because this not only destroys their personal life, their health, but also their future careers. And a family जो कि अगर उस तरह का एक इंडिविजुअल जो कि इस बात से इस या ड्रग रिलेटेड में फंस गया हो, वो परिवार ही जानता है कि वो कितना मुश्किल होता है फिर दोबारा उसको उसमें से निकाल के लेके आना। तो जरूरी है as a society that we combat this menace in terms of what we would look forward to and up to is information flow to the police, and as well definitely strict legal and policing and legal action against these criminals. Thank you, sir. We also read about the launch of Mission Karmyogi Capacity Building Program by Union Home Secretary Shri Ajay Kumar Bhalla in presence of Commissioner of Police Shri Sanjay Arora to improve the soft skills of Delhi Police. I think that is वो एक एरिया है जिसमें सर लगातार बहुत सारे पुलिस फोर्सेस काम कर रही हैं टू इम्प्रूविंग सॉफ्ट स्किल्स, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेट्रा। उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर दिल्ली पुलिस के इनिशिएटिव्स? मिशन कर्मयोगी जैसे आपने बताया, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो ड्यूटी अफसर जो बैठता है पुलिस स्टेशन के अंदर और सबसे पहले अगर कंप्लेनेंट जाके उससे मिलता है और अपनी बात रखता है, जो भी उसके साथ हुआ है, क्राइम हो या और कोई परेशानी हो, तो उसको एक ह्यूमन साइड ऑफ पुलिस, एक ऐसा पुलिस ऑफिशियल शुड बी, उससे उसको लगना चाहिए जो कि उसकी बात को एक अंडरस्टैंड करता है और एक उसको नॉट ओनली एक कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड करता है, साथ साथ उसको लगता है कि एक विश्वास भी होता है कि ये शख्स मेरी बात सुन के कोई ना कोई एक्शन जरूर ये पुलिस लेगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश हम लोगों की यही है राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ ट्रेनिंग, जो हमारे जब रिक्रूटमेंट जो होती है, जो कांस्टेबल लेवल पे, सब इंस्पेक्टर्स लेवल पे, हर लेवल पे, इवन एट द सीनियर फॉर्मेशंस, बी इट IPS ऑफिसर्स, soft skill development is a major focus in all the police training academies, all cutting across all ranks. So, and also factored and structured into it is the feedback mechanism. जो भी शख्स जहां पे है और खासकर पब्लिक के साथ, be it the पुलिस स्टेशन लेवल, be it अपने हमारे जैसे लाइसेंसिंग यूनिट हुई या जहां पे भी पुलिस का जनता के साथ संपर्क है, तो वहां पे both feedback forms as well as other feedback, आपके ऑनलाइन फीडबैक हो, हमारे वेबसाइट हो या सब जगह, it has been structured into it so that जो भी फीडबैक आए, खासकर बिहेवियरल हो और प्रोफेशनली काम के तल्लक हो, उस पे हम लोग तवज्जो देते हैं, गौर करते हैं और कोशिश होती है कि अगर कुछ भी जो आइडेंटिफाइड कुछ जो चीजें नजर आती हैं उसको हम किस तरीके से उन कमियों को दूर करें।
एक और सर स्पेशल सेल की इनिशिएटिव which was spoken about was interfaith interface to bring prominent personalities of all communities on one platform to help youth fight radicalization. इसके बारे में से कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है. बीट और अमन कमिटीज, जिसके अंदर की पब्लिक पीस कमिटीज होती हैं, हमारे डिफरेंट जितने लोग हैं, जितने कम्युनिटीज के और बाकी उन सबको जोड़ के, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसमें कि लोग इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं. और इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस, चाहे वो एक before if a problem is building up, उस वक्त भी वो काम आते हैं लोग. और खासकर अगर कुछ घटना घट जाती है उसके बाद भी लोगों को जोड़ के उसको सिचुएशन को नॉर्मलसी में रिस्टोर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा वहां पे इफेक्टिव करने के लिए लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है. और रेडिकलाइजेशन की जैसे आपने बात की, important है at all levels, cutting across in society. Moderation is the key. Radical कोई भी चीज हो या सोच हो, वो अगर तनाव लेके आती है, टेंशन लेके आती है सोसाइटी में, that is not good for the overall fabric and overall day-to-day functioning of the society in general. तो important है कि हम लोग जितने हैं, कोशिश यही हो कि अपनी जहां पे भी हैं और जिस भी be it any faith, any caste or any creed, whatever we follow and pursue, उसके अंदर अपना ख्याल रखते रखते साथ साथ जो हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनका भी उतना ही, एक पुरानी कहावत है, do unto others what you expect others to do unto you. So that is generally applicable for everything across the board in all parameters. So that is what we should all focus upon. Right, sir. Sir, when I travel across Delhi, and it's been now over 3 decades that I have lived here, first as a student and then as a career seeker, and जब भी मैं एक दिल्ली में कई दिल्ली दिखते हैं. So one sees at times a Bengaluru, one sees at times a Moradabad, one also sees a Chhapra. It's perhaps one of the most heterogeneous cities in terms of diversity, in terms of geographical diversity, also facilities, amenities, etc. In सब को policing को, and policing has to be uniform. Policing का जो criterion है, that you have to be uniform, you have to be equal with all. तो इस पे sir, how does one approach this in both in terms of sensitization from senior officers to junior officers, addressing कहीं पे crime ज़्यादा है, कहीं कम है, हर geography के अलग अलग अपने challenges हैं, and also it is a melting pot of cultures. मेरे JNU में प्रोफेसर आनंद कुमार शिक्षक हमारे थे जिनके साथ मैंने PhD की, वो कहते थे, so it's a melting pot of cultures with people of diverse cultures coming to Delhi, unlike a Mumbai or a Chennai जहाँ पे अपनी एक historical identity, एक cultural identity रही है. तो पुलिसिंग को सर आप लोग कैसे देखते हैं इस unique feature of Delhi को policing के लिहाज से? As you rightly pointed out, Delhi is like a mini India. Everyone comes to Delhi, being the capital, being this, it attracts everyone, and from all states, across all states. So, and it is the focus as well, being the capital, all the embassies are over here, so that international flavor, that international aspect to it is there, and also because work-wise, employment-wise, it gives so many opportunities to everyone. It does attract a lot of people. And be it जैसे JNU की बात हुई, Delhi University की बात हुई, you find students coming from all across to study in the colleges and universities because they are prestigious, they are well established,
colleges over here. So that is what makes policing in Delhi even more interesting and challenging. And also to set an example, we in Delhi police do look forward to, be it in terms of technology, be in terms of setting standards as a police force. We in Delhi police have taken the lead, have taken the, especially चाहे टेक्नोलॉजी के आपके आप जितने आप प्रोजेक्ट देख लें, दिल्ली पुलिस हैज ऑलवेज इनिशिएटेड so many things and were the first to do so. Our police control room of Delhi, I think, is one of the finest, not only in India but in the world. The kind of good work which our communication system and our ERS system which we have built up is one of the best. And the number of calls and the number of the magnitude of problems which Delhi police handles, be it the Kisan agitation when it happened, because अगर जब एजिटेशन होता है, people from all across जो आपके neighboring states के हैं वहाँ कहते हैं, they also come over to Delhi. So in terms of handling law and order agitations and situations, Delhi police has handled some of the most difficult situations. और दूसरा जो बड़ा पहलू जो दिल्ली पुलिस हैंडल करती है is your अपना 26 जनवरी के रिपब्लिक डे परेड हो या 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का लाल किले पे भाषण हो और सारे लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो it is a matter of pride to police to do policing in Delhi. Wonderful. And officers like you bring in a lot of finesse and perfection to policing, and of course the much needed charm and management of perception. I think that is what Bureaucrats India strives for. There are a lot of very negative stories happening about bureaucracy, around bureaucracy, on police, on policing. And we at Bureaucrats India strives to bring the good side. We celebrate positivity. We bring in officers like Sanjay Singh to interface with our audience. This conversation goes as a digital asset on YouTube or social media platforms. And that is what we have been working for. Now, some personal questions, sir, before I request you to address some aspiring IPS officers. I know about that you are a fitness freak. What are some other hobbies that you have, sir? Well, listening to music is one of them. I am an avid fan of Kishore Kumar songs. That is there, and love to hum a little. Wonderful. And any good memories of Hindu College, the great Hindu College, sir, that you would like to share with? Hindu College was an excellent experience. It is it made us what we are today, and again, it had all the flavors. In our class, I had done history honors over there. They were, our fellow students. They were from all areas of India, and the kind of memories sitting in the Hindu College canteen and in the ground over there. I think people in Hindu who know Delhi University well would really, it's one of the most cherished memories of those college days. Right, and you're also very active on some of the alumni groups that I have the privilege of being there with you. Kafi बच्चे sir, despite the numerous opportunities that has emerged in last decade and a half, I think for millions, the civil services continue to be the job they want to get into. What are your tips to these aspiring young bureaucrats? See, the key word is perseverance. Do not give up. Because लोग बहुत हैं, competition बहुत है, luck factor is always there.
So do not get disheartened if you do not make it in your either your first or second attempts. There's nothing to feel disheartened about. If you have a dream, if you want to become a civil servant, and persevere, hard work, sincerity, determination. Those are the values which see you through, not only to get into a job, into civil services, but even otherwise in life. If you value these, be it civil services or any other job which you choose to do, अगर आपके पास ये values हैं, ये commitment है और sincerity है, आप कोई भी field में जाएंगे, आप अच्छा करेंगे. आपका क्या इंस्पिरेशन था सर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का? Frankly, I do remember, not to, when we were studying, and especially when I was doing my master's in history. So, DU ka culture, bilkul, there's a lot of talk, between students, between lecturers and professors over there. And one thing which really motivated me was, see, talk is fine, but you got to be there in the eye of the storm to be able to do it. So for me, the thing which really I wanted to do was कि ठीक है यार बहुत बातें हो गई, let us go, and whatever little you can do and contribute, being in the system and being over there, you can help somebody or do something much more rather than just by talking and discussing about it. Excellent. And how can I forget the special CP of perception management? How are you using social media, sir? I see a lot of good things happening, including the podcast. I am sure one of the first. I say this and share this with a sense of happiness and excitement that in my other avatar, I work for Grey Matters Communications. And only yesterday, we won an award for innovative use of social media for one of our partners, Bihar State Power Holding Company Limited, where we have brought in two mascots, Bijli Didi and Voltage Bhaiya, and how they are trying to connect with the consumers and making them aware about the various initiatives. How has Delhi Police approached social media in recent past, sir? See, one of the major challenges for a policeman is to fight perceptions and images. I remember when I was young and I was traveling in a train going to Hyderabad. So there was this lady and her child was crying. So the lady was telling a child, "Beta soja nahi to main police ko bula dungi." So that is the mindset, which, and I've heard it so many times even after that. If a child is doing a prank, the mother that she's going to call. And also the colonial mindset, the colonial baggage which the police as a force and as an institution, which it had to throw it off all over the years. So to change that, and the stereotyped filmy image which these films have tried to portray over the years. So it's not an easy fight. It's not an easy thing, because so much good work is done by the policemen day in and day out. Then only things happen and things work out over there. It's not you remove a policeman from the street, or you remove a cop from a junction, and you can see what suddenly the behavior of all the motorists and over there. They'll be jumping the red lights, how even small things. Why should it be the police which has to tell the citizens that you got to wear your seat belts, you should not jump the red light, be it anything related to traffic, wear a helmet. These are things for your safety. You yourself as a citizen, you should follow them. You don't need a policeman or a cop to tell you how to behave on the street or
anywhere around. Those things should be inherently, as a citizen, as civic consciousness, one should be doing those things on their own. So those are the things, of course, and so definitely social media is one platform again in which we need and we try to build awareness. But we look for support, not only from like people from the media, people everywhere all around, that more consciousness is generated, and so that a society which we all dream of, when you that we are all proud of, that is the kind of vision which we in Delhi Police and as would like to share with all of everyone in India and Delhi in particular. Thank you. So we have a question from somebody on this thing. Okay. I think it is related to social media itself, which I think is using. How is the response to the podcast, sir? It's very good, because those are the stories which we want to tell to the people. A lot of, if you look at it, good work does not get that much projected, because people get more interested in sensationalism or in stories which are which generate more interest like that. But good stories, positive stories, small stories, and day-to-day good work done by those kind of stories should also reach the public. Ji, as a student of communication, I see quite a significant intervention by social media. जो एक सर डिपेंडेंस होता था, मैं पत्रकार रह चुका हूँ प्रिंट में, और मुझे याद है कि कभी हम लोग कुछ लिख देते थे और पुलिस को एक अपना वर्जन देना पड़ता था या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो उसको आपको 24 घंटे वेट करने पड़ते थे. Today, almost instantaneously, you can respond, you can intervene, you can interject. So that's one great power that social media has given us. Of course, besides seeding and feeding these great stories, positive stories that you're talking about. और मुझे याद है सर, आप वो भी कह रहे थे कि कैसे how Twitter is becoming now the trigger for news makers. You know, what is being put here makes for a print story the next day or a television story the day after. Great work, sir. Amazing. Looks like, feels like we should go on and on, but I know you have other commitments to keep, and how much grateful I am to you, sir, and your team, Inspector Manoj Mudgalji, for coordinating all this. I also thank my team, Pooja Rai, Vigya Dwivedi, Rakesh Singh, Pragyalal, Rajiv, for helping me do this wonderful job. Thank you very much, sir. We'll keep in touch and keep seeing you more often. Jai Hind. Namaskar. Thank you so much. Jai Hind.